Hello everyone. So yesterday in lecture 1 we had a look at topological groups. Okay. तो आज हम बस उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे. We'll have a look at more examples. तो just to recall, कल हमने पढ़ा था कि एक टोपोलॉजिकल ग्रुप बेसिकली एक ग्रुप होता है जो कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस होता है and such that the two maps, the multiplication map, which is a map from G cross G to G, and the inversion map, the map from G to G. Here, any element A B is mapped to A star B, and here any element A is mapped to A inverse. These both the maps are continuous. Okay. एंड हमने 5 एग्जाम्पल्स देखे थे. फर्स्ट ऑफ ऑल, any group G with the discrete topology. Second, any finite group G. Third, R with respect to addition. Fourth, Mn R with respect to addition. Fifth, GLN R with respect to मल्टीप्लिकेशन. इन सब में हमने दिखाया था कि जो मल्टीप्लिकेशन मैप है इन सब के लिए G क्रॉस G टू G पे जाने वाला और इन्वर्जन मैप, ये दोनों क्या होंगे? कंटिन्यूस होंगे. आप सभी को याद होगा. ओके. अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं आज. इसमें कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स, बट उनमें हमें प्रूव नहीं करना होगा. You will get to know why. सबसे पहले हमारे पास set of all orthogonal matrices. So these are the matrices A in M and R, यानी कि n cross n, those matrices, orthogonal matrices की definition लिख रही हूँ. ठीक है. Such that A transpose A is identity. तो ये वो matrices होती हैं जिनका inverse identity, जिनका इन्वर्स ए ट्रांसपोज होता है. ठीक है. जिनका इन्वर्स ए ट्रांसपोज होता है. सिमिलरली हमारे पास यूनिटरी मैट्रिसेस आती हैं जिनका इन्वर्स ए ट्रांजुगेट या फिर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, जो भी आप कहें. ओके. सो ए इंटू ए ट्रांजुगेट इंटू ए, इट इज डिनोटेड बाय स्टार. ओके. सो दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी. ऑल राइट. Okay, now one thing you must notice is that these orthogonal matrices, it is a subgroup of GLNR. जो हमने set of all invertible matrices का ग्रुप देख रखा है, ठीक है, उसी का सबग्रुप होता है this orthogonal matrix. And similarly the unitary matrices जो होती हैं, that is a subgroup of GLN-C. ठीक है. set of all invertible matrices with entries coming from C. all right. so सबसे पहले हम प्रूव करते हैं. now let us suppose I have A B in ON. what I need to show that A with respect to multiplication है. ठीक है. ऑपरेशन ON with respect to multiplication में यहाँ पे दिखाने वाली हूँ that it is a subgroup. Okay. so for that, first of all, let us consider AB. मुझे दिखाना है कि AB also belong to ON, और मुझे दिखाना है A inverse also belongs to ON. so for that I will need to show AB transpose AB is equal to AB into AB transpose, and that is equal to identity. So let us first consider AB transpose AB. It is a very trivial task to check. So it is simply AB, once again, AB transpose, we'll open it. So it is B transpose AB. Now A transpose A is identity because A is orthogonal.
So we will be left with B transpose B, and that is again identity because B is again orthogonal matrix. So we'll be left with identity. Similarly, if I have AB transpose, so that will be B transpose, A transpose. So taking B transpose, we will get identity. We'll be left with A transpose, which is again identity. Okay. Now we need to show that A inverse. Okay. Let me do it like this. Yeah. Now we need to show that A inverse is orthogonal. So we need to show A inverse transpose is identity, and similarly the vice versa. A inverse transpose A inverse is, ठीक है, identity. So one ही show करते हैं हम. Okay. So we can write it as, this is A inverse and this is A transpose ka inverse. Now you must be knowing A B inverse is B inverse A inverse, right? So इस वजह से this is A B inverse, so it will be like this. So this is B inverse A inverse, so we'll write it like this. All right, when we will open it, it will be opened as A inverse A transpose inverse. Okay. Now A transpose is identity because it is orthogonal matrix, and identity inverse is identity. Okay, so we are done. So in this way we can show that this ON with respect to multiplication, this is closed with respect to multiplication है ना operation, and it is closed with respect to inverse also. ठीक है. So इससे हमें क्या पता चलता है कि yes, ON is a subgroup of GLN R. Similarly, we can show that UN is a subgroup of GLN C. Okay. Now अब एक छोटा सा remark. हमने ये subgroup क्यों दिखाया? It will all get related. Okay. So the remark is that every subgroup of a topological group is a I will write TG, topological group is a topological group. Okay. Every subgroup of a topological group is a topological group. Why is it so? Because let us suppose, तो इसका एक छोटा सा एक proof देखते हैं. And once I have this thing, क्योंकि ON एक subgroup है GLNR का, और क्योंकि UN एक subgroup है GLNC का, और जो कि GLNR GLNC दोनों topological groups हैं, तो subgroups होने की वजह से ये दोनों भी topological ग्रुप्स हो जाएंगे. तो इसके बाद हमें कुछ करना नहीं होगा, है ना. बस हमें इसका प्रूफ देखना है. ठीक है, जस्टिफिकेशन देखनी है इसे, नॉट एक्चुअली प्रूफ. सो एक्चुअली H इज, लेट्स से कोई मैंने H लिया विच इज अ सब ग्रुप ऑफ G. ओके. नाउ H क्लियरली ग्रुप है. सेकेंड H एक टोपोलॉजिकल स्पेस है with the subspace topology. This is a topological space. I write TS. Okay, I'm writing TS for topological space. So is a topological space with subspace topology, from G. मतलब G पे जो भी टोपोलॉजी रही होगी, वी विल टेक द सबस्पेस टोपोलॉजी. ठीक है, H पे. और थर्ड हमें जस्टिफाई करना होगा कि जो मल्टीप्लिकेशन मैप है, ठीक है, नाउ इट विल बी फ्रॉम H क्रॉस H. द मल्टीप्लिकेशन मैप एंड द इन्वर्जन मैप, दे बोथ आर continuous. So this is a map from H cross H to H and inversion from H to H. ठीक है, where वही सेम कहानी, AB map to AB and A is mapped to A inverse. They both are continuous. Okay. Now, as you know
कि restriction of a continuous map is continuous map is continuous, और हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन मैप जो कि G क्रॉस G से G पे जा रहा है. सो इफ आई रिस्ट्रिक्ट दिस मल्टीप्लिकेशन मैप, ठीक है, on H क्रॉस H, एंड इफ आई रिस्ट्रिक्ट इन्वर्जन मैप टू H, तो ये दोनों भी कंटिन्यूस होंगे. यस और नो? तो हमने जस्टिफाई कर दिया कि इस बार इनके लिए जो मल्टीप्लिकेशन मैप है और इन्वर्जन मैप है, ये दोनों कंटिन्यूस आ रहे हैं. ठीक है ना? In this way. So hence, every subgroup of a topological group is a topological group, and here we can say H is a topological group. तो इस वजह से अगर कोई सबग्रुप है तो हमें उसको जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि वो भी एक टोपोलॉजिकल ग्रुप बनेगा. ओके, सो दिस इम्प्लाइज ON, UN, they are topological groups. ओके, तो ये हम ध्यान रखेंगे. Next, similarly, SLNR, because it is a subgroup of GLNR. SLNR we all must be knowing. It is the set of all A matrices in MNC with determinant 1. Invertible matrices का ये एक subgroup होता है. ठीक है, with the determinant of A is equal to 1. All right. With the field, you can take here field K is equal to R or C. So in general, अगर मुझे यहाँ पे लिखना है तो मैं यहाँ पे K डाल सकती हूँ. Okay, I can even put K over here. All right. So this is again a topological group. Okay. Next, special unitary matrices and special orthogonal matrices, ठीक है, which are defined as A belong to ON orthogonal के लिए और A belong to UN unitary के लिए. ठीक है, ये definitions अलग अलग लिखी जाएंगी पर जल्दी से लिखना है, so I'm writing it in one. समझ पाओगे आप. such that determinant of A is equal to 1. स्पेशल आ गया ना. ओके, तो ये पर्टिकुलर एक सब ग्रुप बनेगा UN का, ये पर्टिकुलर सब ग्रुप बनेगा ON का, जो कि खुद टोपोलॉजिकल ग्रुप्स है. तो इसलिए ये दोनों भी टोपोलॉजिकल ग्रुप्स बनेंगे. ठीक है, इसलिए हमें इन्हें अलग से स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसे रिमार्क में कवर हो जाते हैं. एनी सब ग्रुप ऑफ अ टोपोलॉजिकल ग्रुप इज अ टोपोलॉजिकल ग्रुप. ओके, नाउ लास्ट, जैसे हमने R विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखा था, नाउ वील हैव अ लुक एट R-0 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. सो वी विल शो दैट दिस इज ऑल्सो ए टोपोलॉजिकल ग्रुप. तो इसके लिए व्हाट डू वी नीड टू शो? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज अ ग्रुप, इट इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस. ओके, इसे एज अ सबस्पेस ऑफ रियल लाइन R में कंसिडर कर सकती हूँ. मुझे यहाँ पे बस शो करना होगा कंटिन्यूटी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन एंड द इन्वर्जन मैप. सो हियर ये R स्टार मतलब R-0 क्रॉस R स्टार से R स्टार पे जाने वाला एक मैप है वेयर एनी एलिमेंट AB इज मैप्ड टू प्रोडक्ट A इंटू B. ओके, तो इसे सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से, जैसे हमने R+ में किया, MNC में किया, GLNR में किया, उसी तरीके से लेट अस टेक अ सीक्वेंस AN, BN which converges to A, B. Okay, in R star cross R star, which is a topological space. So by that result, if X cross Y is a topological space, X and Y in a sequence. So let me write. If X cross Y is a topological space, sequence Xn, Yn converges to XY if and only if Xn converges to X
and yn converges to y. Using this result, we get an must converge to a, bn must converge to b in r star. This implies an bn will converge to ab, which implies m an comma bn is convergent to m of ab, and here we are done that m is continuous. Okay, similarly it goes for the inversion map. So let us take a sequence an which converges to a in r star. अगर आपको दिक्कत हो रही है, so let me write this inversion map goes from r star to r star such that a is mapped to inverse, यहाँ पे multiplicative inverse is 1 over a. So let us take a sequence an convergent to a in r star. मुझे दिखाना है I of an is convergent to I of a. ठीक है, यानी कि 1 ओवर ए एन सीक्वेंस 1 ओवर ए पे कन्वर्ज करती है। एंड क्योंकि ये जो ए एन सीक्वेंस है ये r माइनस 0 में है, सो ऑब्वियसली 1 ओवर ए एन सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 1 ओवर ए in r star, and 1 over a is defined because a is non-zero. Okay, so this is what, that I of an is convergent to I of a. ओके, सो यहाँ पे हमने सारे एग्जाम्पल्स देख लिए हैं अभी तक टोपोलॉजिकल ग्रुप्स के, ठीक है, दी ऑर्थोगोनल यूनिटरी मैट्रिसेस. ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है, लेट अस मूव अहेड. All right. Now, there is a very important result. Important. Okay. ये एक equivalent condition देता है for a group to be a topological group. Okay. So it says G is a topological group if and only if G is a topological group if and only if the map phi from G cross G to G where A comma B is mapped to A B inverse, this map is continuous. Okay, तो इसका प्रूव करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल we need to prove this thing. So let us suppose कि G एक topological group है, and here I need to prove that phi is a continuous map. Okay, so let us suppose G is a topological group. For short form I'm writing TG. Okay, so that means I'll keep it in my mind. ये मेरे mind में है कि multiplication map और inversion map, ठीक है, they both are continuous. Okay, this is in my mind. So that means मैं सोच रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ें I'll be using to prove this phi map. ठीक है, this is I need to prove here phi map from G cross G to G where A comma B is mapped to A B inverse. This map is continuous. All right. Okay, so observe that ID cross I, ठीक है, so ID cross I is a map from
G cross G to G cross G, and further I have the multiplication map from G cross G to G. So here if I have any element A comma B, then it is mapped to आइडेंटिटी है फर्स्ट पे, तो ए पे ही मैप होगा. बी के लिए क्या होगा, इन्वर्जन मैप लगेगा, तो बी विल बी मैप टू इट्स इनवर्स. एंड मल्टीप्लिकेशन मैप क्या करता है, उन्हें उनके क्लोजर पे भेज देता है. ठीक है, द ऑपरेशन लगाकर, दैट इज एन एलिमेंट इन द ग्रुप जी. नाउ ऑब्जर्व दैट दिस M composition ID cross I is equal to the map phi. क्यों, क्योंकि A comma B, ठीक है, under phi is A comma, okay, I should be writing like this, M composition ID cross I, let us evaluate, applied on A comma B. So जैसे हमने ऊपर भी देखा, this is M composition ID cross I applied on A comma B. So it is A comma B inverse, right? And multiplication map will map it to A B inverse, right? Now this is equal to phi A comma B. यही phi of A comma B है. Cool. So that means they both maps are equal. Now observe that ID cross I is continuous because of the result. If you have a map F from X to Y and G from X to Z, so if these are two maps which are continuous, जहाँ पे ये X, Y, Z topological spaces हैं, then this map F cross G, which goes from X to Y cross Z, where an element X is mapped to F of X comma G of X, this map is also continuous. ठीक है, so because of this result ID cross I from G cross G to G cross G, it is a continuous map. ठीक है, क्योंकि ID और इन्वर्जन मैप ये दोनों कंटिन्यूस हैं. इन्वर्जन क्यों कंटिन्यूस है, क्योंकि G अभी हम टोपोलॉजिकल ग्रुप मान के चल रहे हैं. ठीक है, एंड व्हेन आई कंपोज इट with the this ID cross I, when I compose it, ठीक है, then it is again continuous. ठीक है, तो इनमें क्या रीजन होगा, being composition of two continuous map, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मैप यहाँ पे कंटिन्यूस है. अगेन G is a topological group, so being composition of two continuous map. All right. Now, so इसमें हमने प्रूव किया कि M composition ID cross, this is nothing but equal to phi. So we have proved here कि phi is continuous. ठीक है, so this implies phi, which was the map from G cross G to G, where A comma B is mapped to A B inverse, this map is continuous. Okay, so हमने prove किया the first part, if G is a topological group then this map phi is continuous. Now we need to prove the backward part.
ओके, सो अब हमें बैकवर्ड पार्ट प्रूव करना है, विच सेज कि let us suppose we are given this map phi from G cross G to G where A comma B is mapped to AB inverse. Let us suppose this map is continuous. ठीक है, so अभी ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास given पार्ट है. Now what do we need to prove? We need to prove that G is a topological group. So for that we need to justify the multiplication and the inversion map. They both are continuous. Okay, so first of all, have a look at inversion map. So can I say inversion map is nothing but the restriction of phi to singleton 1 cross G, which is a map from singleton 1 cross G to G where A comma B. अब यहाँ पे A तो obviously it is going to be 1 always, है ना? So it is this 1 comma B is mapped to 1 into B inverse, which is nothing but B inverse. Or equivalently I can say where, क्योंकि यहाँ पे 1 जो है वो फिक्स हो गया है एक तरीके से, है ना? सो फर्स्ट लेट अस राइट दिस ओनली. सो दिस inversion map is nothing but phi from the singleton 1 cross G. So we can look it as a map from singleton 1 cross G to G where B is being mapped to its inverse. Okay, so this inversion map is continuous, being restriction of a continuous map phi. ठीक है, तो हमने पहला वाला पार्ट जस्टिफाई किया that this is continuous being restriction of a continuous map. ठीक है, restriction of a continuous map होने की वजह से this map is basically continuous. Now similarly we need to justify the continuity of the multiplication map. Okay, so multiplication map, observe that multiplication map is a map from G cross G to G, and we can write it as M of A comma B is equal to phi of AB inverse, because we know phi is a map जो कि AB को AB inverse को AB inverse पे भेजेगा. So that is nothing but AB and that is nothing but M of AB. So multiplication map is continuous. Why? Since phi is continuous. और आपने phi के टर्म्स में ही multiplication map को एक्सप्रेस किया है. So we have justified, therefore G is a topological group. Alright, अब एक छोटा सा नोट हम देखेंगे. We'll have a look at a very small note. Okay, so that is very simple. A intersection B is phi if and only if one does not belong to A inverse B. A intersection B is phi if and only one does not belong to A inverse B. तो हम इसे on contrary करके प्रूव करेंगे. So let us suppose X, okay, let us suppose A intersection B is non-empty.
Okay. A intersection B is non-empty if and only if x belong to A, कोई element आपको मिलेगा and x will be in P also. That is if and only if x inverse will belong to A inverse and x will belong to B. अच्छा, one thing एक मुझसे गड़बड़ हो गई है और अभी फिलहाल ये देख लो x inverse x is 1 and it belongs to A inverse B. If and only if 1 belongs to A inverse B. So हमने प्रूव किया कि उल्टा पार्ट A intersection P is phi if and only if 1 belongs to A inverse B. अब गड़बड़ ये हुई है, you may not be knowing the meaning of A inverse, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे चीज़ें डिफाइन करनी है पहले, ठीक है, and then I'll explain the above part again. तो कुछ चीज़ें जैसे कि इसे हम बोलते हैं notations. These are the notations that we will be following. Okay. सबसे पहले यहाँ पे हम A, B जो भी यूज़ करेंगे वो सेट्स हैं, ठीक है, दे आर सबसेट्स ऑफ द ग्रुप G, ठीक है, A, B दे आर कंटेन इन द ग्रुप G, दे नीड नॉट बी सब ग्रुप. ओके, सबसे पहले what do we mean by AX? So it is set of all AX type of elements where A belong to capital A. Second आता है हमारे पास what do we mean by XA? What do we mean by? तो ये इसे हम लेफ्ट ट्रांसलेशन राइट ट्रांसलेशन कहते हैं सेट की. ये है लेफ्ट ट्रांसलेशन जहाँ पे हमने लेफ्ट में एक्स ले रखा है, ठीक है. सो इट इज एक्स ए वेयर ए इज इन कैपिटल ए. ओके, नेक्स्ट वी हैव थर्ड. This is x and this is a. Okay, third we have what do we mean by A inverse? तो जो ऊपर मैंने लिखा था A inverse, so you may not be knowing अभी तक तो, but यहाँ पे it is nothing but अब ये ग्रुप है ना जो A के एलिमेंट्स है, let's say they were A1, A2 डॉट till AN. तो A इनवर्स कुछ नहीं, बस ग्रुप में इनका जो इनवर्स एलिमेंट्स होगा ना वो that I will be writing over here, A1, A2, so on till AN. Okay, so it is set of all A inverse where A belong to A. There are two more notations. One is AA and the other one is A square. So AA means set of all A1, A2 type of elements where A1, A2 they both are coming from the set A, and the fifth part is A square, which is set of all A square type of elements where A is in capital A. All right. Now, one thing which should be noted over here is there is a relation between A square and AA, and that is A square is properly contained in AA. For example, consider Z with respect to addition. ये एक topological group होता है. Yes. So we know कि we can think of this that Z square is contained in ZZ. क्यों? क्योंकि we can take the element 6 which belongs to ZZ, ठीक है, being 2 into 3, but it does not belong to Z square. So I can write 6 does not belong to Z square, but 6 being 2 into 3, it belongs to Z into Z. Okay, so we are done in that case. Now, there is one more definition, and that is of a symmetric set. When do we call a set to be symmetric? And that is
हम एक सेट को सिमेट्रिक कब कहते हैं, ठीक है. सो दिस इज दिस definition that we have. So a set A is said to be symmetric if it is symmetric about the identity element of the group G. अगर कोई set identity element के about symmetric हो तो उसे हम एक symmetric set कहते हैं. So इसकी definition है, ये तो intuition थी, ठीक है. So that was the intuition. Symmetric set की definition है a set A which is equal to A inverse. अगर एक सेट A inverse के बराबर हो तो उसे हम सिमेट्रिक सेट कहते हैं, ठीक है. जैसे एग्जाम्पल्स अगर आप मुझसे पूछें तो इफ़ यू आर कंसिडरिंग R with respect to addition as a topological group, then example of a symmetric set is simply the close in the -1, open interval or -1, close interval. It could be any interval which is symmetric about 0, क्योंकि 0 R with respect to addition में identity element होता है, right? So more examples we can take -a, A or any subgroup. जैसे you can take rational. अब ये बहुत important बात है. if I take, मतलब मैं अगर किसी टोपोलॉजिकल ग्रुप में हूँ और मैं उसका सब ग्रुप ले लेती हूँ एज सेट, ठीक है, तो वो भी एक सिमेट्रिक सेट होगा. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बीइंग अ सब ग्रुप, लेट्स से ए मैंने लिया और वो एक सब ग्रुप है ग्रुप जी का. सो बीइंग अ सब ग्रुप, एक्स विल बिलोंग टू ए if and only if X inverse will also belong to A. If and only if X belong to A inverse. So this implies A is equal to A inverse. So एक subgroup के लिए क्योंकि A inverse के बराबर आ जाएगा, क्योंकि उसे अपने inverse elements अपने अंदर ही रखने पड़ेंगे. It is a subgroup. So इस वजह से it is going to be a symmetric set. और अगर मुझे कोई ऐसा सेट लेना हो विच इज़ नॉट सिमेट्रिक, तो नॉट सिमेट्रिक के एग्जाम्पल्स यू कैन कंस्ट्रक्ट. सो इफ़ आई टेक इंटरवल, जैसे आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में ही अगर मैं एक पार्ट के एक तरफ के एलिमेंट्स ले लूँ, लेट्स से आई टेक open interval 0, 1, then it is not symmetric. Or if I take any open interval 0, t, then it is going to be not symmetric. Okay, so these are the examples. Now I think if you will review that note, this A intersection B is phi if and only one does not belong to A inverse B. maybe आपको उस वक्त A inverse समझ ना आया हो, ठीक है, बट अब you know A inverse, by inverse I mean inverse of the elements of the set A. Here A and B are just sets. Okay, so you can review this part, it is very easy. Now let us move to a very important proposition. ठीक है, दिस इज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जो मैं इस लेक्चर में डिस्कस करने वाली हूँ. And this is going to be the last result of this lecture. So this is basically a proposition which says that if I have any open set U, अगर मेरे पास U कोई भी एक open subset है ग्रुप G का, तो उसके जो ट्रांसलेशंस होते हैं XU, UX, ये भी ओपन सेट्स होते हैं, ठीक है. एंड इफ आई कंसिडर U इनवर्स, तो ये भी एक ओपन सेट. तो मतलब U अगर ओपन सेट है ग्रुप G के अंदर, तो उनके ट्रांसलेशंस भी ओपन सेट होते हैं और उनका इनवर्स इज ऑल्सो एन ओपन सेट. ऑल राइट, एंड okay, so let us first have a look at this, then further. और यहाँ पे अगर आप open को closed से भी replace कर दो,
ठीक है, दिस रिजल्ट विल होल्ड। जो भी आर्ग्यूमेंट्स मैं ओपन के लिए लिखूंगी उसमें आप ओपन को क्लोज से रिप्लेस कर दोगे, दैट सेम प्रूफ विल वर्क। ओके, एंड द नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू ओपन सेट्स इज ऑल्सो ओपन। ठीक है, यू वी आर ओपन सेट, सबसेट ऑफ द ग्रुप जी, देन यू इंटू वी इज ऑल्सो ओपन। ओके, यहाँ पे ओपन सेट से मेरा क्या मतलब है, अब क्योंकि जी एक टोपोलॉजिकल ग्रुप है और टोपोलॉजी आपको ओपन सेट्स के बारे में बताती है एक स्पेस के, तो इसलिए उस सेंस में आई एम टेकिंग दोज टू बी ओपन सेट्स। ओके, ओके, नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द प्रूफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने सबसे पहला रिजल्ट किया था ना कि G इज अ टोपोलॉजिकल ग्रुप इफ एंड ओनली phi which is a map from G cross G to G where A comma B is mapped to A B inverse, है ना। so this map is actually continuous, है ना। अच्छा, अब मैं यहाँ पे A B inverse लूँ या फिर मैं ओके आई एम स्पेसिफिकली टेकिंग इट टू बी एक्स वाई। अब मैं यहाँ पे एक्स वाई इन्वर्स लूँ या एक्स इन्वर्स वाई लूँ, आप इसे भी प्रूव कर सकते हैं कि फर्क नहीं पड़ता है। ओके, यू कैन प्रूव दैट रिजल्ट इक्विवेलेंट कंडीशन में दिस मैप टू बी कंटिन्यूअस। ओके, नाउ इफ आई रिस्ट्रिक्ट दिस मैप फाई टू लेट्स से सिंगलटन एक्स क्रॉस जी, जहाँ पे x इज फिक्स्ड, मैंने कोई भी एलिमेंट x ये जो था ना फिक्स ले लिया ग्रुप G में से, ठीक है। और अगर मैं इस एलिमेंट को फिक्स भी कर दूं एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ अ कंटिन्यूअस मैप इज कंटिन्यूअस, सो आप देखोगे ये अब एक मैप मिल जाएगा आपको, ठीक है, वेयर एन एलिमेंट y इज बीइंग मैप टू an element y is being mapped to x inverse x inverse y। तो ये मैप जो होगा ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान देना इसी मैप को वी एक्चुअली कॉल इट द लेफ्ट ट्रांसलेशन मैप, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि वी ऑलवेज हैव, जब भी हमारे पास एक टोपोलॉजिकल ग्रुप होता है वी ऑलवेज हैव दीज टू मैप्स, ठीक है। एक G से G पे जाता हुआ सच दैट एनी एलिमेंट Y इज मैप टू X इनवर्स Y। तो जब मैं बात कर रही हूँ लेफ्ट ट्रांसलेशन, तो उसमें मैं X इनवर्स लेफ्ट से ऑपरेट करवाऊंगी, ठीक है। और सिमिलरली जब मैं बात करती हूँ राइट ट्रांसलेशन फ्रॉम G टू G, तो उसमें मैं क्या करती हूँ, एक्स इनवर्स को राइट से ऑपरेट करवाती हूँ। ये दोनों मैप, जब भी मेरे पास जे एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये दोनों मैप हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं एंड इनफैक्ट दे आर होम्योमॉर्फिज्म। अब ये राइट ट्रांसलेशन मैप कहाँ से आया ये भी मैं फटाफट से बता देती हूँ। सो अगेन जो हमने रिजल्ट प्रूव किया था, सो phi from G cross G to G where x comma y is mapped to x y inverse, जैसे हमने पहले लिया था हम वैसे ही ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये वाले मैप को रिस्ट्रिक्ट कर दूं टू माय say singleton x cross G, not actually this, if I restrict this map, ओके थोड़ा सा अलग आ सकता है बिकॉज आई नीड एक्स इनवर्स, सो मैं यहाँ पे थोड़े से चेंजेस करती हूँ। आई कैन राइट इट एज say y comma x mapped to yx inverse. Now if I restrict this map for that fixed x in G, if I restrict this map to G cross singleton x, ठीक है, then restriction of a continuous map is continuous and this is a map where any element y is being mapped to yx inverse where x in group G is fixed. So this left translation and right translation in such a way they both are continuous map अगर G एक टोपोलॉजिकल ग्रुप होता है। और ये जो हमने फर्स्ट रिजल्ट पढ़ा था इक्विवेलेंट कंडीशन फॉर अ ग्रुप to be a topological group that the map phi is continuous, उससे follow up होता है। All right, now
ओके, सो आई हैव बोथ दीज मैप टू बी कंटिन्यूअस, और इसी से मैं शो करूंगी कि लेफ्ट ट्रांसलेशन एंड राइट ट्रांसलेशन ऑफ एन ओपन सेट इज ओपन. सो लेट अस सपोज यू एक ओपन सबसेट है ग्रुप जी का. ठीक है, अब आपको पता है क्योंकि Lx लेफ्ट ट्रांसलेशन कंटिन्यूअस है, तो Lx इनवर्स ऑफ यू, दिस इज ओपन इन G. नाउ यू मस्ट बी नोइंग, अगर यहाँ पे मेरा क्लेम होगा कि Lx इनवर्स ऑफ u, दिस इज नथिंग बट लेफ्ट ट्रांसलेशन ऑफ xu, दिस इज ओपन इन G. Okay, so let us suppose I take an element Z which belong to, say, Lx inverse of u. So this is if and only if Lx belongs to u. That is if and only if, what is Lx? This is Z, और हम लेफ्ट में x इनवर्स से ऑपरेट करवाते हैं. दिस बिलोंग्स टू u, and that is if and only if, where does Z belong to? Z belongs to xu. All right. Now similarly सेम आर्ग्यूमेंट से अगर यूँ हम कोई भी एक ओपन सेट लेते हैं ग्रुप जी के अंदर, ठीक है, तो क्योंकि आर एक्स एक कंटिन्यूस मैप है, सो आर एक्स इनवर्स ऑफ यू विच यू कैन सिंपली प्रूव कि ये यू एक्स बनेगा, दिस इज ऑल्सो ओपन इन द ग्रुप जी. ओके, और ये हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? अगेन, इफ आई टेक एनी एलिमेंट z इन आर एक्स इनवर्स ऑफ u, सो दैट इज इफ एंड ओनली इफ आर एक्स z belongs to u, and that is if and only if, जो राइट में होता है तो हम राइट में x इनवर्स से ऑपरेट कराते हैं, so it belongs to u, and further that is if and only if z belongs to ux. So we have proved that r x inverse u is ux. ठीक है, तो हमने यहाँ पे अभी तक प्रूव कर दिया है कि जो लेफ्ट ट्रांसलेशन ऑफ ओपन सेट और राइट ट्रांसलेशन ऑफ ओपन सेट है वो ओपन होते हैं. ठीक है, और ऐसे ही इन्वर्जन मैप की कंटिन्यूटी को यूज़ करते हुए, ठीक है, फ्रॉम G टू G, अगर मैं यू कोई भी एक ओपन सबसेट लेती हूँ G का, okay, then by continuity of the inversion map, I will get I inverse of u is open in G, and I inverse of u is nothing but u inverse. U inverse is open in the group G. Okay, and last, अगर दो ओपन सेट्स का हम प्रोडक्ट लें, लेकिन ध्यान देना जो ऊपर वाले थे वो क्लोज के लिए भी ट्रू होते हैं, लेकिन दिस पर्टिकुलर इज नॉट ट्रू फॉर क्लोज्ड सेट्स. ठीक है, अगर मैं दो क्लोज्ड सेट्स का प्रोडक्ट लेती हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि वो क्लोज्ड आए. ठीक है, सो प्रोडक्ट ऑफ टू ओपन सेट्स इज ओपन क्योंकि इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज यूनियन ऑफ यू एक्स ट्रांसलेशंस वेयर एक्स बिलोंग टू वी. अभी हमने प्रूव किया है अगर यू ओपन सेट होता है तो उसका ट्रांसलेशन भी ओपन सेट होता है, और क्योंकि आर्बिट्ररी यूनियन of open set is open, so from that we will get that uv is open. Okay, so here we end this lecture with a short summary. so यहाँ पे अगर दो मेन important points जो हमने इस लेक्चर में पढ़े हैं मुझे हाईलाइट करने हो,
ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली थ्री मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर देयर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल was that any subgroup of a topological group is again a topological group. Okay, the second most important point second that we studied is that equivalent condition कि G is a topological group if and only if the map phi from this G cross G to G where A comma B is mapped to A B inverse, this map is continuous. और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि या तो आप ये वाला ले लीजिए या फिर द मैप वेयर ए बी इज मैप्ड टू ए इनवर्स बी, दिस इज कंटिन्यूस. ठीक है, और द लास्ट इज द थर्ड पार्ट. ठीक है, जो हमने पढ़ा प्रोपोजिशंस कि अगर यू कोई भी ओपन सबसेट है ग्रुप जी का, सो the right translations, the left translation, U inverse, they all are again open in the group G, and the product of two open set is again open in the group G. Okay, this is open in G, where how UV is defined, it is set of all elements of the type x1 x2. इनमें जो ऑपरेशन है वो क्लोजर ऑपरेशन है ग्रुप जी का. ठीक है, जो भी बाइनरी ऑपरेशन है ग्रुप जी का वही है. ठीक है, सो इट इज सच दैट x1 इज इन U and x2 is in V. Okay, so here we end this lecture.